In this tutorial, we take some problem from the topic set and miscellaneous exercise of set particularly. So I will take the problem. Here is the problem. If PA equal to PB, then so that A इक्वल टू B. मुझे दे रखा है कि पावर सेट A इक्वल टू पावर सेट B, देन सो दैट A इक्वल टू B. सो देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सोल्यूशन फॉर ऑल A belongs to A is some element in A set implies set A is subset of A. set A जो होगा वो सबसेट होगा A का. implies set A belongs to पावर सेट A. मतलब जो सेट A होगा वो पावर सेट A का एलिमेंट होगा. implies set A belongs to power set B as it is given in the question. PA equal to PB implies A set is subset of B, implies A belongs to B, implies A is subset of B. We name this as 1. Similarly, for all B belongs to B implies B set is subset of B set, implies B set belongs to power set B. Now it is given PA equal to PB, so set B, well, element that inside the set belongs to P power set A as PA equal to PB implies B set is subset of A, implies B element belongs to A. So B set B, ये तो एलिमेंट देखो B सबसेट इज सबसेट ऑफ दिस. सो इसी के बाद हम लिख सकते हैं सेट B is subset of A. So this is 2. So A is subset of B and B is subset of A from 1 and 2. 1 and 2, we write this as A equal to B. So in this way the problem is solved. So I will take one more problem related to this power set. So here is the problem. For any set A and B, prove that power set A union power set B is subset of PA union B. तो हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं. सो पावर सेट A यूनियन पावर सेट B इज सबसेट ऑफ PA यूनियन B. सो उसको सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन देखिए. कंसीडर एनी कैपिटल X ऐसे लिख दिया बिलोंग्स टू पावर सेट A यूनियन पावर सेट B. मीन कोई X एक एलिमेंट ले लिया दैट बिलोंग्स टू पावर सेट A. X मतलब सेट है, इसको हम लोग सेट बोल सकते हैं. X इज एनी सेट. सो X बिलोंग्स टू पावर सेट A एंड पावर सेट B. इट मीन दैट X बिलोंग्स टू P power set A or X belongs to
capital X belongs to power set B. So implies X is subset of A or X is subset of B. Implies X is subset of A union B. This is OR. So this is A union B. Implies X belongs to power set A union B. So this is the result. PA union PB subset PA union B.